Hello, hi, namaskar. Welcome to Pristine IAS. So, this is your lecture number one. As we have discussed in yesterday's lecture, that we'll start with GS2. So, we'll start with GS2 Polity Paper 1. ठीक है जी? So, let's find out the syllabus first. ଆମେ Polity 1 रे कौन कौन डिस्कशन करिबा? We'll start with Indian Constitution. कौन अछि एथिरे? Historical underpinnings, evolution, features, amendment, significant provisions, and basic structure. Second, ଆମେ ଦେଖିବା functions and responsibility of union and state, issues and challenges pertaining to federal structure. It is important. Devolution of power and finances to local levels and challenges therein. Then separation of power between various organs. ये गोटे part. Then dispute redressal mechanism like तमरो लोक अदालत हेगला, ग्राम न्यायालय हेगला. And last part is comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries. काली भी कहते कि आम तीन टा कंट्री सहित कंपेयर करबा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को. वन इज यूके यूनाइटेड किंगडम, वन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द लास्ट वन इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. ए तीन टा सहित आम कंपेयर करी देखिबा. बिफोर वी विल स्टार्ट, द गुड प्रैक्टिस इज फर्स्ट यू गो थ्रू द सिलेबस. सिलेबस को आमको जना पड़ियो व्हाट वी नीड टू स्टडी. Then we need to go and watch the PIQ. PIQ को जना पड़ियो. PIQ रे जना पड़ियो कि how much we need to study. गोटे सिलेबस कहबो केते हमको कोन पढ़ियार अछि सिलेबस, what to study, and your PIQ will tell how to or how much we need to study. कौन पढ़ियार अछि केते पढ़ियार अछि. तो आमे जानले कौन पढ़ियार अछि सिलेबस आमे देखले. बर्तमान आमे PIQ एनालिसिस करिबा. We don't go through the question answer, only will read the questions, so that जेतବେଳେ आमे डिस्कशन करिबा तापरे you will get a clear idea कि कोडू क्वेश्चन आछि आ को एरिया पर हमको फोकस करियार अछि. So let's see some of the questions. आमे केवल 3 वर्ष रो क्वेश्चन ही देखिबा, जोटा कि 2022 रे जेबे सिलेबस चेंज होला तापरे जहा भी क्वेश्चन वगैरह आछि 22 23 24 ए 3 वर्ष रो क्वेश्चन हम देखिबा. So let's start with 2024. एटा 22 23 हे गला. तो आमे देखिबा आगे 2024 रो क्वेश्चन देखिबा. आमे we'll start with 2024. एटी आमे क्वेश्चन भी दे दिछु सो दैट तुम जानि परियो को ईयर रो कोड क्वेश्चन आछि. जस्ट गोटे सेकंड. ओके हम टिको तळ बेसी तळ पळे आसलानी ऊपर पळेलनी बेसी. Just 1 minute. ओके सो PIQ 2024 हम स्टार्ट करिया. 2024 क्वेश्चन कौन थिला? डिस्कस द नेचर एंड प्रॉब्लम ऑफ कोalition गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक अछि, मन रखियो खाली क्वेश्चन. डिस्कस द nature and problem of coalition government in India, analyze the challenges
of coalition politics in federal system. केवल जो चार्टा टॉपिक मु कहली से चार्टा टॉपिक रो जहाँ क्वेश्चन आछि ताकू ही हम डिस्कशन करबा एबे. Then the next question, put a second. Nature of coalition government हे गला, challenges हे गला. Then question होला, next question होला, the role of finance commission in upholding fiscal federalism is important. It is a statement. Critically analyze, discuss briefly the terms of reference in 16th finance commission. Finance commission रो role to maintain federalism. आउ जो formula से माने यूज करथिले, this is the formula, the devolution, सेटा से पचारथिला. Next question होला, constitutional morality is not a natural sentiment, it had to be cultivated. एटा ला तम statement. Question थिला, what is the constitutional morality vis-a-vis social morality in Indian context. Indian context से constitutional morality के देखियार अछि आगु social morality को हमको describe करियार अछि. Discuss its scope and purpose. को propose माने को propose आर scope कोन आ propose कोन अछि. Okay, the spelling is mistake actually. This is not propose, this is purpose. Discuss a few landmark judgments of Supreme Court on constitutional morality. Supreme Court रो judgment भी यही तुमको ए नोट नहीं मिली जीवो, so we will discuss that thing also. तापरे next question थिला, explain the relevant constitutional provision which underline strong center framework adopted by constituent assembly. Constituent assembly जो strong center निहाइतला, ठीक अछि, तारो relevant हमको देखियार अछि. The factors which led to the assembly members to such a federal design. तो कौन कौन फैक्टर थिला जोथमै जो माने मेंबर थिले से constituent assembly रो they think he will go for this strong center framework. हमर अछि ना जेतले emergency provision लागि जाउछि सेतले कोन होछि center will be all powerful. ठीक अछि, से आउरी भी अछि आर्टिकल 356 किबा आर्टिकल 365 यूज करिकि सेंटर जेबे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी ब्रेकडाउन होबो किबा जेतले सेंटर रो जा डायरेक्शन अछि ताको स्टेट न मानि परिबो से केस रे भी से स्टेट गवर्नमेंट को माने डिसॉल्व करिकि सेठी पार्लियामेंट कैन और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रन दैट जोटा कि हमें कहउचंदी प्रेसिडेंट्स रूल. तो ए सब जिनस देखले हम कोन लागुची, हमको लागुची कि सेंटर इज ऑल पावरफुल. ठीक अछि, तो नॉट ऑल पावरफुल, सेंटर इज मोर पावरफुल. ऑब्वियसली मोर पावरफुल न होले नेशन जो इंटीग्रिटी रहला, सिक्योरिटी रहला ताको करिया बहुत ही डिफिकल्ट हो. फॉर दैट रीजन, ठीक अछि, तो हमें एडी डिस्कस करिबा कोन कोन फैक्टर थिला जोथमे द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिंक दैट द सेंटर शुड बी स्ट्रांग. नेक्स्ट हमें देखिबा, this is the next question. Why is a democratic government called a limited and responsible government? Keyword कोन democratic government आउ limited and responsible government. Explain the doctrine of check and balance. केमिति check and balance रहउची गवर्नमेंट ऊपर को बॉडीज चेक आ बैलेंस करछंदी. Mentioning the relevant constitutional provisions as applicable to India's constitutional democracy. ठीक अछि, एटा सरला. तापरे आमे जिबा 2023-24. 2023-24 रो फर्स्ट क्वेश्चन थिला. It was based on the first amendment of the constitution. से गोटे स्टेटमेंट देथिले, while celebrating 75 years of Indian constitution, there is discussion on the women in 9 yard of sari who triggered first amendment of the constitution. Elucidate the case. ये जो थिला ना चंपाकम दुराईराजन केस, तारो बैकग्राउंड सहित केबे हेतिला कोन पे हेतिला सेटा को हमको एटी डिस्कशन करियार अछि. तो जेहेतु फर्स्ट अमेंडमेंट रो पडिछि, सो देयर इज ए चांसेस कि अलगा अमेंडमेंट भी पड़ी परिबो. सो वी हैव included all the important amendments in this note only. Second हला, ओके, खाली क्वेश्चन देखो, हमें डिस्कशन करला बेले तुम बुझी परियो. What do you understand by cooperative federalism? Right question. What do you understand by cooperative federalism?
डज इट एग्जिस्ट इन इंडिया डिस्कस ठीक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऊपर हमको डिस्कशन करिया थिला व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जेम मैं कहतली कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे क्वेश्चन आछि इंडिया और फ्रेंच आ गोटे बोधे इंडिया और यूके रो भी आसछि बोधे देखिए हम 2022 डिस्कशन करला बेले व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हाउ इट डिफर्स फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आउ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जे बुझिथिबो से ही ए क्वेश्चन को आंसर कर परिबो एंड व्हेनेवर वी आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन वी नीड टू supplement your answer with examples यदि हम एग्जांपल दौनांती that shows that we don't understand the concept खाली हम superficially हम बुझी जंती यदि हम एग्जांपल दौनांती then the examiner will think that हम खाली superficially जଣା अछि and if you know the subject superficially then you are not going to get a good score in the paper तो हमको with example that to Indian example सहित हमको देखैकी obviously तो हम इंडिया ऊपर कथा होचंती तो इंडिया रे एग्जांपल हमको एठी लिखिया पड़िबो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंस कमिशन इन सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर वर्ष भी पड़थिला 2024 रे 2023 रे भी पड़थिला फाइनेंस कमिशन रो जो सेंटर स्टेट रिलेशन अछि ताकू मेंटेन करिया रे कोन तार रोल अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2022-23 आसला फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द बैकग्राउंड ऑफ सरकारी कमिशन जेहेतु सीटी सरकारी कमिशन पचारची ठीक अछि आमे लिखले बैकग्राउंड लिखले जहाँ क्वेश्चन ऐसे पचारला सब आमे मेंशन कले की रिकमेंडेशंस आमे लिखले फाइन जेते टिकेटा बहुत बड़ करके आमे लिखिछु बिकॉज़ आंसर टा एमिति होवा दरकार कि किछि भी क्वेश्चन सेतरो पचारले तुम जेमति ताको आंसर कर परियो ठीक तो एटा को हम 250 300 वर्ड न रखि टिके आमे एक्स्ट्रा देछु जेहेतु सरकारी कमिशन से माने पचारचंती सो केबे भी से माने तार नेक्स्ट कमिशन जो पुंची कमिशन अछि तापर से माने क्वेश्चन पचारि पारंती फॉर दैट रीजन वी हैव इंक्लूडेड द पुंची कमिशन हियर जेमिति हमें सरकारी कमिशन लिखले पुंची कमिशन रो भी डिटेल्स हमें एटी दे दिछु यू विल रीड इट वंस मन रही जीवो बहुत डिफिकल्ट होय कि बहुत अधिक डिफरेंसेस तादरे मिलिबनी सो यू कैन डू इट एटी जेमिति हमें कंपैरिजन करछु सरकारी कमिशन अलॉन्ग विथ पुंची कमिशन फाइन तापर हला एक्सप्लेन आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि जे एंड के रो सहित जो आर्टिकल 370 आउ 35A दैट इज जम्मू एंड कश्मीर सहित रिलेटेड सेटा देन रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड डोमिसाइल लॉ इन जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर इज ए पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रिटी दिस इज अ स्टेटमेंट योर वर्क इज टू डिस्कस दिस जेतल डिस्कस करिछि तमे ताको पॉजिटिवली ताको लिखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन हला आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कस्टोडियन ऑफ इंटरस्टेट रिलेशन इन इंडिया माने कोन इंटरस्टेट रिलेशन इंटरस्टेट काउंसिल हे गला जोनल काउंसिल हे गला एटा तो बहुत ही कॉमन ना हमें प्रीलिम बेले भी पढुचंदी नेक्स्ट क्वेश्चन हला द इंटरस्टेट काउंसिल इज मियर नॉट मोर टिके स्पेलिंग एट मिस्टेक अछि इज ए मियर एडवाइजरी देन इफेक्टिव कमेंट कमेंट कहते तो दिटा अंग हमें लिखिया पड़िबो ठीक ऑब्वियसली वर्ड लिमिट को भी हमको ध्यान देबा पड़िबो से केवल से क्वेश्चन का आंसर करी बाकी जे छाड़ देबा ताले भी किछि मतलब रहइबो ना देन नेक्स्ट क्वेश्चन थिला एक्सप्लेन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शेयर्ड रूल वर्सेस सेल्फ रूल ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन थिला एग्जामिन द इश्यू ऑफ इंडियन फेडरलिज्म ये सब बहुत ही माने कोन कहया बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन सो दिस आर ऑल द क्वेश्चंस सो हमें क्वेश्चन देख देले हमें पीआई की देख देले नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें पूरा बिगिनिंग रू स्टार्ट करे पे रेडी अछंदी ओके देखो कौन दीजिए द फर्स्ट इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन माने हमको बुझिया पड़िबो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमरो तयारी हेची ठीक 1947 1950 रे जहा ओके 1950 26 जनवरी केबे खत्म होतला 1949 रे 26 नवंबर रे हमरो कॉन्स्टिट्यूशन लिखिया सरथिला से दिन को हमें कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली मानुचंदी सम ऑफ द प्रोविजन were started on 26 November but maximum provision 1950 26 January लागितला सेटा को हमें कहउचंदी रिपब्लिक डे तो हमको एबे बुझिया पड़िबो कि हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि ताको के अफेक्ट करथिले
जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग कहते कि कोटा कोटा केमती केमती ता आगुरु लॉस थिला एंड हाउ दैट अफेक्टेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि तो हम देखिबा एटी किछि किछि अछि ताको डिवाइड कराई जेमती द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन एंड स्ट्रक्चरल लीगेसी टाइमलाइन हमको देखियार अछि और स्ट्रक्चरल लीगेसी देखियार अछि द इवोल्यूशन रेट देखो द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन introduced legal and administrative structure primarily to centralize control collect revenue and maintain order ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଥିଲା ମାନେ ଦେ ଆର୍ ରୁଲ୍ଡ ବାଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗସ୍ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗ ହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେରିଟୋରିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାକୁ ଅକୁପାଇ କଲେ and they start to centralize things control centralize kale collect revenue jemti janithibo ki they get the diwani to collect revenue from Bihar Odisha West Bengal and maintain law and order however these acts okay ye jo act seman nei asle inadvertently laid the structural framework for India's independence hela pare jo constitution आमर तैयारी हला से सब गुडा ता द्वारा अफेक्टेड हिच किछि किछि मात्रा रे सो जदि हम टोटल टाइमलाइन को देखिबा इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइम फ्रेम गोटला कंपनी रूल जोटा कि 1773 ରୁ स्टार्ट है कि 1858 1858 रे कोन हेतला तमरो 1857 रे तमरो सिपाही रिवोल्यूशन हेतला और सिपाही म्यूटिनी नॉट रिवोल्यूशन सिपाही म्यूटिनी परे ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर कर देला जहां भी कंट्रोल थिला इंडिया रे ताकू ब्रिटिश क्राउन ताकू टेक ओवर कला सो दैट फेज इज नोन एज क्राउन रूल and the period or the time period is from 1858 to 1947 हमको जो एते पर्यंत इंडिपेंडेंस मिलिला 1858 टू स्टार्ट करके से पीरियड को हम कहंती क्राउन रूल तो हम देखिबा कोन कोन लेजिस्लेशन थिला कोन तार एक्ट थिला सो द वेरी फर्स्ट एक्ट दैट we will discuss is regulating act of 1773 regulating act 1773 see kon kala it centralized kon began the subordination of Bombay and Madras presidency to the governor general of Bengal first time pe se kon kala governor of Bengal ku se banai dela head right governor of Bengal तांको तले रहिले द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास तो जे थिले गवर्नर ऑफ बेंगल तांको हायर पोजीशन मिलला इट क्रिएटेड फास्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल एटू तमरो फर्स्ट टाइम पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर इज क्रिएटेड तापर देखो पिट्स इंडिया एक्ट जोटा हम जानचंदी 1784 रे असला एटी कोन करा गला डुअल कंट्रोल separated commercial function from political functions गोटे political गोटे commercial function तापर हला court of director and board of control so you just तमे कमेंट करिके कहियो कि commercial active माने commercial function किए देखथिले court of director और board of control then charter act 1833 here we can see the extreme centralization एटी कोन करा गला made the governor general of Bengal as the governor general of India देखो जो वर्डिंग केम चेंज होची जे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले तां कोन करिया गला तां कराला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टोटल इंडिया रे से गवर्नर जनरल हे गले स्ट्रिप्ट लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम बॉम्बे एंड मद्रास ऑब्वियसली तांको जति लेजिस्लेटिव पावर थिला ताको हटे दिया गला देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 here we can see the separation of power separated the legislative and executive function of governor general's council for the first time legislative kamo आ executive kamo legislative जेमती तमरो जेमती हमर एमएलए एमपी माने जो लेजिस्लेशन करचंदी executive हला स्टेट रो executive हले तम गवर्नर आसीबे सीएम आसीबे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आसीबे सेंटर हले तमरो प्रधानमंत्री पीएम आसीबे तमरो प्रेसिडेंट आसीबे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आसीबे ठीक एजी वगैरह आसीबे तो एठी चार्टर एक्ट 1853 रे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गला तापर स्टार्ट हला 1858 रे क्राउन रूल फर्स्ट हला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
जोटा कि से कहते गुड गवर्नेंस एक्ट, direct accountability. Here the company rule comes to an end. Establish the office of secretary of state for India. Office of secretary of state for India responsible directly to British Parliament. The British Parliament ଗୋଟେ member ରହୁଥିଲେ and ତାଙ୍କୁ appoint କରାଯାଉଥିଲା as secretary of state of for India, ମାନେ ସେ ସେଠି ରହିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା ଯାହା affair ହଉଛି ସେ ସବୁକୁ control କରୁଥିଲେ. Then Indian Council Act 1861 decentralized and portfolio system. Portfolio माने different minister को different डिपार्ट माने कौन कहया मिनिस्टर को मिनिस्ट्री मिलुची मंत्रालय कि जनक हाथ सब पावर न रही कि अलग अलग लोक अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग मिनिस्ट्री को से कंट्रोल करेंगे. इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो गवर्नर थे तांको पावर मिलला. इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम, एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न कैबिनेट मिनिस्टर. जेमि कैबिनेट जो मिनिस्टर छन तांको गोटे पोर्टफोलियो मिलुची ना. धर्मेंद्र प्रधान इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक. नितिन गडकरी द मिनिस्टर ऑफ हाईवे. अलग अलग माने अश्विनी वैष्णव हेले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो अलग अलग मिनिस्टर को अलग अलग पोर्टफोलियो मिली एंड दे आर रिस्पांसिबल टू मैनेज द मिनिस्ट्री दैट हैज असाइन्ड टू देम. तापर हला काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट और इंडिया काउंसिल एक्ट 1909. इट इज अबाउट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. आमे एटा सब जिंस पढिछन ना, ए सब जिंस आमे प्रीलिम से पढिछन, तो जल्दी जल्दी ए सब जिंस हम डिस्कशन करिवा जोटा मेंस रो जो थ्रू क्वेश्चन आसुची आउ जोटा स्पेसिफिकली मेंस तापर आमे अधिक फोकस करिवा. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रिस्पांसिबल गवर्नमेंट एंड डायरेक्टरी. डायरेक्टरी तुम जानिछो, इंट्रोड्यूस डायरेक्टरी, transferred and reserved subject at the provincial level, created a bicameral legislature at the center. Bicameral माने double house. Direct माने दीटा double government, दीटा जिनस हम गोटे ट्रांसफर सब्जेक्ट रहिबो that is given to the ministers, आ गोटे reserve for the governor. तापरे डायरेक्ट की हेगला तार bicameral माने दीटा हाउस, गोटे अपर हाउस गोटे लोअर हाउस. अपर हाउस का हम कोन कोचन देबे राज्यसभा, लोअर हाउस को कोचन तो लोकसभा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एटा हम बहुत सारे जिनस नै चंदी. द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ए सब जिनस मिलथिला. आ एई एक्ट रे गोटे आस्थिला ओडिसा पई, दैट इज योर क्रिएशन ऑफ ओडिसा सेपरेट प्रोविंस 1936. ओके, तापरे किछि किछि हमें जो इम्प्लिसिट टॉपिक्स जोटा एठी मेंशन कराइन ताको भी हम रखिछु. The ideology roots of the constitution. The Indian constitution is not just a legal document, it is a political philosophy. It synthesizes Western liberal thoughts like liberty, rule of law, with socialist ideals like DPSP, state-led equity, and Gandhian philosophy like village panchayat, cottage industry, prohibition of slaughter. ठीक, ये सब जिनस हला. कार्बन कॉपी डिबेट कि किछि लोक कहंती कि इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी ताको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को रखी आम ये कॉपी पेस्ट कर देछु, बट दैट इज नॉट ट्रू. केतरा जिनस आम अडॉप्ट करिछु, वी हैव बोरोड सम प्रोविजंस, बट ताको डायरेक्टली आम कॉपी पेस्ट करनु. डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ इंडिया ताको मॉडिफाई करा हैछि, राइट. गोटे एटा जतल पढिबो कॉन्स्टिट्यूशन तुम ये जिनस लिखि परिबो. देन द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फोकस ऑन कंसेंसस ड्रिवन अप्रोच. माने देखो कंसेंसस माने कोन, गोटे डिस्कशन तुम करछो गोटे विषय रे, लेट्स सपोज कि 5 जन मेंबर अछन, 5 मेंबर, राइट. गुड सेकंड सस, ओके. तो 5 जन मेंबर अछन, 5 मेंबर. यदि कहबो कि वोटिंग बेस होबो, तो लेट्स सपोज 3 जन गोटे ए को वोट देले आ बी को 2 जन वोट देले, तो एठी कोन हो, ऑब्वियसली ए विल बी द विनर. एठी कोन हो, जहाँ पाखरे अधिक मेजोरिटी थिबो से जहाँ कहबे तांग कथा माने सुना जीवो. एटा वोटिंग सिस्टम. बट कंसेंसस रे कोन, कंसेंसस रे ए 3 जन भी मानिबे, ताहे तो ए 2 जन भी राजी हेबे, ठीक अछि. माने ए जो 2 जन अछंती जोटा हमें माइनॉरिटी बोली कहि परिबा, तांकर जहाँ ओपिनियन अछि ताकू भी हमकु कंसीडर करिकि जीवाक पड़िबो. यदि हमें तांको ओपिनियन को भी कंसीडर करूचंती, then only it is known as consensus driven approach. जेमिति हमर एबे चीफ इलेक्शन कमिश्नर किंबा इलेक्शन कमिश्नर जेतले, ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तुम धर जेतले तांकर अपॉइंटमेंट होउची, तो के मेंबर होचंती, मेंबर होचंती प्राइम मिनिस्टर,
होम मिनिस्टर, ठीक, एलओपी एमती रोचंती। लेट्स सपोज कि एठी एलओपी रो ताले कहया गले किछि रोल नाही, कारण पीएम आउ होम मिनिस्टर जहाँ कहबे 3 जन अछन ना, तो पीएम आउ पीएम एचएम आउ एलओपी रहिले लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो एटी एचएम भी पारे, जस्ट आई एम गिवन एग्जांपल, एचएम भी पारे कि आउ जने कैबिनेट मिनिस्टर जाको पीएम नॉमिनेट करिवे से भी आस पारे। बट इन एनी केस पीएम आउ काउंसिल ऑफ जो कैबिनेट मिनिस्टर तांकर तो गोटे ओपिनियन रहइबो कि लेट सपोज से कहउछत ए को ही आमे सिलेक्ट करिवा, बी एलओपी कहबो ना आमे बी को सिलेक्ट करिया, तो एठी तो केबे भी एलओपी जीति पारिबो ना, कारण एठी दी जनकर दीटा वोट हेले अंकर गोटे वोट। तो ए जे एसब जगह कोन करा जाय, एसब जगह कन्सेंसस ड्रिवन अप्रोच करा जाय कि भोट न करिकी समस्तंक पचारे कि समस्त जदि किछि लेट सपोज कि से माने कहले कि गोटे नियम माने गोटे लॉ एमती इंट्रोड्यूस करा जीवो, तो सेठी जो माने माइनॉरिटी थिबे तांकर जदि अफेक्टेड होतबो कि से माने जदि किछि कहिबे तांको कथा को भी इनकॉर्पोरेट करा जीवो। तो समस्त तो सहमति देबे सेतबेले ही किछि जिंस को अडॉप्ट करा जीवो, दैट इज कंसेंसस बेस्ड अप्रोच और कंसेंसस ड्रिवन अप्रोच। ठीक अछि, ए सब जिंस गला। देन वी विल सी द फीचर्स, अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर। फीचर गोटे अलग जिंस, अमेंडमेंट इज टोटली डिफरेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट। तीनटा टॉपिक हम गोटे को लिखिछंदी, सो वी विल स्टार्ट विथ द फीचर। फीचर सरला पर वी विल गो टू अमेंडमेंट एंड देन वी विल गो टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर हला कोन, फर्स्ट हला लेंदी एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन adopted by sovereign nation। देखो दी प्रकार अछि, गोटे कोनती रिटन, गोटे कोनती अनरिटन। रिटन अनरिटन, अनरिटन माने नुहे कि सेने लेखा है कि नहीं, लेखा है, बट देखो रिटन माने कोन, इंडिया रे जेमती हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन अछि, ओके, लेंदी भी बहुत लेंदी काहेकि बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि दैट इज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्लाइड टू बोथ टू स्टेट एंड सेंटर। ठीक, सेंटर और स्टेट पे गोटे ही कॉन्स्टिट्यूशन अछि, सो इट इज लेंदी। आ रिटन अछि माने पूरा रिटन फॉर्मेट रे अछि। जेतला हम अनरिटन कहउछन लाइक ब्रिटिश, एटी अनरिटन माने कोन, माने तांको कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन माने आगुरु जहा जहा तांकर ओके, तांकर जहा जहा आगुरु ओके, तुम कहि परिबो लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन नो आमे कहि परिबा स्टैट्यूट और लॉज। ठीक अछि, जहाँ आमे कन्वेंशन नै कि मान चलचंती, जहाँ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन नु जदि किछि नुवा जिंस आसला, कॉमन लॉ, ठीक, कॉमन लॉ ए सब जिंस तांकर नै कि तांकर कॉन्स्टिट्यूशन हिची, राइट। तो अनरिटन और अनकोडिफाइड ता कहया बेटर हबो, अनकोडिफाइड, अनकोडिफाइड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड इट इज नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट, रादर एथिरे बहुत सारा जिंस अछि, जेंति मु कहली कि जुडिशियल डिसीजन हे गला, देन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हमें कहि परिबा, फाइन। ए सब जिंस को नै कि सेमान किछि स्टैट्यूट हे गला, किछि लॉज हे गला, किछि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हे गला लाइक बिल ऑफ राइट्स। ठीक अछि, कि मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, मैग्ना कार्टा ए सब जिंस को नै कि तांकर कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हेची। सो दैट इज अनरिटन और अनकोडेड। अनकोडेड इज बेटर वर्ड। ओके, लेंदी काई गला, आमे जस्ट कथा होतले कि यूनियन स्टेट सब पे गोटे लॉ, गोटे तमरो कॉन्स्टिट्यूशन, देन देयर इज फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शंस, सब जिंस गोटे डॉक्यूमेंट रे जेहेतु रहइबो सेटा लेंदी हबो। ओके, सो यू जस्ट गो थ्रू इट। आई होप कि तुम ए सब जिंस प्रीलिम्स रे ऑब्वियसली पढिथिबो। देन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जेमते हमें कहले कि वेरियस जगह रु हमें वेरियस माने कोन करछन, हमें अलग अलग जगह रु अलग अलग प्रोविजन को हमें बोरो करछन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन कॉल्ड एज कोन, बैग ऑफ बोरोइंग, as its framers adopted the best features। Okay, this is the line, framers adopted the best feature from various constitutions while adapting them to Indian conditions। केवल आमे तांकर जा लिखा हितला सेटा को आमे नै के आसी के हम कॉन्स्टिट्यूशन में रखि देनांदी, वी हैव अडॉप्टेड दैट, ताको आमे नै कि त आसले अलोंग विथ दैट इंडिया रा कंडीशन ने सेटा को केमिति आमे अडॉप्ट करियो से अनुसार ताको हम कॉन्स्टिट्यूशन ने रखि चंदी। मेजर बोरोइंग से गला यूके। फर्स्ट कोन हला, यूके रो आसी पार्लियामेंटरी सिस्टम, हमें पढ़िबा आगु पार्लियामेंटरी सिस्टम कोन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कोन, देन रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, लाइक यूएसए सेठी दीटा सिटीजनशिप अछि,
you will be citizen of USA and you will be citizen of one of the states. But India ର ଗୋଟେ citizen, whether you are in Punjab, whether you are in Odisha or Rajasthan, तुम जोड़ी भी थाओ तमर citizenship will be Indian citizen. There will be no citizen of any states. तापर ହେଲା cabinet government. We know that cabinet government माने parliamentary form of government जोटी which is headed by the prime minister. ठीक अछि. तापर ହେଲା from US रो हम कोन कोन जानछन्ती fundamental rights, then judicial review, independence of judiciary, impeachment of president. ठीक अछि. Then we have Ireland. Ireland बहुत ही फेमस कौन अच्छी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जोटा कहते नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा आउरी भी बहुत सारा अच्छी आमे कनाडा रे कोन आनचंदी, ऑस्ट्रेलिया रे कोन आनचंदी, साउथ अफ्रीका रे कोन आनचंदी, जर्मनी जोटा ओके वेस्ट जर्मनी जोटा तुम देख पारे से सब जिंस. सो यू नो दैट सेटा भी तुम पढ़िचो. विल डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन दैट. Number 3 is federal system with unitary bias. India has a federal structure but possesses strong unitary features, especially during emergency. Emergency वाले center will be all powerful. Even center यदि चाहिए state जो subject अच्छी तापर भी they can make law, but yes they need to pass it by the Rajya Sabha. Rajya Sabha तक pass करने पड़ेगा under Article 249. जहाँ स्टेट लिस्ट अच्छी स्टेट सब्जेक्ट भी से लॉ बन पारे. बट ये केतल हुए जिते इमरजेंसी सिचुएशन वगैरह थी से ऑब्वियसली आमर यहाँ से माने कंप्लीट फेडरल न कहीकि आम क्वासी फेडरल बोली कहते. क्वासी फेडरल बोली कहते बिकॉज सेंटर इज ऑल माने सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट. फेडरल स्ट्रक्चर कौन कौन हो पार. द एग्जांपल्स आर डुअल पॉलिटी कंसिस्टिंग यूनियन एंड स्टेट with constitution division of power. गोटे अच्छे ना यूनियन लिस्ट, गोटे स्टेट लिस्ट, गोटे कनकरेंट लिस्ट. कनकरेंट लिस्ट रे दी जन पावर बन पारे. बट जदि सेम सब्जेक्ट रे जोटा स्टेट लॉ बन जदि यूनियन लॉ बनइबो द लॉ ऑफ यूनियन विल प्रिवेल. रिटेन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन विथ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. हमर जुडिशियरी सिस्टम टा स्टार्ट होची कोर्ट तमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किबा लोअर कोर्ट स्टार्ट हला. लोअर कोर्ट तापर हला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तापर हला हाई कोर्ट तापर हला सुप्रीम कोर्ट. ए सब गोटे चेन रे माने अछंती. ओके दैट इज इंडिपेंडेंट. तांको ऊपर किछि एग्जीक्यूटिव किबा लेजिस्लेटिव रो किछि पावर नाही. दैट्स व्हाई दे आर इंडिपेंडेंट बट दे आर वन. से माने गोटे सिस्टम को फॉलो करिके काम करंती. देयर इज माने डिफरेंसेस. आमे जतल पढिबा एनजेएसी पढिबा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन किबा कॉलेजियम सिस्टम पढिबा सेतले आमे ए सब विषय रे अधिक डिस्कशन करिबा. देन द लास्ट federal feature here is bicameral legislature. both house अच्छी upper house lower house. rigid amendment केतरा जगह रे simple majority रे हिजबो, केतरा जगह तुमको special amendment दरकार, केतरा जगह रे ओके absolute simple majority केतरा हबो, केतरा तुमको special majority दरकार, केतरा जगह special majority plus 50% state ratification दरकार. so this is rigid. किछि अच्छी simple रे हिजबो, किछि rigid अच्छी. Then unitary features. Unitary feature कौन? Single constitution and single citizenship. तापर हला strong center. आउ कौन हला residuary power with center. Residuary power और emergency provision सब center पाकर रहेगा. एटा हमें the power okay this feature is borrowed from Canada जोटी की से कोई की center को अधिक powerful बना. तो जैसे जिते residuary power अच्छी जेमती देखो जितने आमर कन्स्टिट्यूशन लिखाला से स्टेट लिस्ट आउ सेंट्रल लिस्ट कले यूनियन लिस्ट कले फाइन. आम यूनियन लिस्ट कले गोटे सेकेंड आम यूनियन लिस्ट कले गोटे तापर आम गोटे स्टेट लिस्ट कले गोटे कनकरेंट लिस्ट कले. जिते आम आम कन्स्टिट्यूशन बनाला से तो इंटरनेट वगैरह नाला. तो इंटरनेट कौन रखता ना यूनियन रखिपारे ना स्टेट ना कनकरेंट कहीं ना से इंटरनेट बोले किसी लॉ माने इंटरनेट ही नथिला तापर कोन लॉ बना हबो. तो जरा इंटरनेट आसिला सेटा कोठी आसीबो ऑब्वियसली आसीबो एटा रेसिडुअरी पावर रे एंड द रेसिडुअरी पावर इज विथ द सेंटर. तो हमर जेमति अछि ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अछि तो एटा सेंटर बनेतला. जे स्टेट बनेयाउ चाहिबो ओके स्टेट माने ऑब्वियसली यदि स्टेट समान जिंस करियो ताल तो सेंटर रे पावर रहइबो ना. सेठी यदि स्टेट ताकू छाडी के आउ किछि लॉ बनेयाउ चाहिबो दे कैन आल्सो डू दैट
बट रेसिडुआरी पावर आम जहाँ लेट सपोज कि आगू आसले रोबोट उपर किसी लॉ दरकार हम एबे तो किसी ना तो सेटा पावर क्या पावर अच्छी दैट पावर इज विथ द सेंटर एंड लास्ट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड ऑल इंडिया सर्विस अंडर यूनियन कंट्रोल ऑल इंडिया सर्विस रे राज्यसभा स्पेशल पावर अच्छी केवल राज्यसभा चाहिए ही ऑल इंडिया सर्विसेज से किसी नुआ फॉर्म कर देन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन हुए meaning India follows the Westminster model of parliamentary democracy where the executive is responsible to the legislature. That is called as collective responsibility of the executive to the legislature. Sabu minister mane they will be collectively responsible to the Lok Sabha. Right? President is the nominal executive and prime minister is the real executive. Nominal executive के president और real executive हेले तमरो पीएम आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट जोटा हम कहउचंदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू लोकसभा ठीक अछि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंडिपेंडेंट रादर देन कंप्लीटली सेपरेटेड से माने अलग अलग काम करंदी बट इट इज नॉट लाइक कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव को जाई परिबेनी ताले पीएम केमिति हेबे ताले पीएम भी तो जने एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विथ ही इज आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर से लेजिस्लेटिव माने से जो लोकसभा मेंबर अछंती दैट इज लोकसभा तो लेजिस्लेचर ना तो लोकसभा मेंबर अछंती बोली से एग्जीक्यूटिव हेचंती फाइन सो दैट इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड बट it is independent and they cooperate each other that promotes ए जो रहिला तमरो parliamentary form of government आर significance कोन it promotes accountability fix करिया पे हेले जेमति गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अछंती लेट्स सपोज कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एबे तो हेजी नीट पेपर लीक हेजी तो जेतले क्वेश्चन पचरा जीवो पार्लियामेंट सेशन जब स्टार्ट हम क्वेश्चन पचरा गले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज टू गिव द आंसर मीडिया क्वेश्चन को से अवॉइड कर परिवे दैट इज देयर माने सेटा पर्सनल मैटर बट जेतले पार्लियामेंटरी क्वेश्चन पचरा जीवो दे नीड टू गिव आंसर टू इट देन रेस्पॉन्सिवनेस फिक्सिंग द रेस्पॉन्सिवनेस देन डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव फिफ्थ है फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी यू नो कि फंडामेंटल राइट्स वाज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट फंडामेंटल ड्यूटी वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ताको हमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ताको ऐड करा गला ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी ठीक अछि सो यू नो ऑल दिस थिंग्स सो एथरे हमें बेस किछि कथा हर नै देन डीपीएसपी द सोर्स इज डीपीएसपी द सोर्स कोन The source of DPSP is which one? Ireland or Irish Constitution. DPSP are constitutional directive that guide the state in establishing social and economic democracy. Okay, political it am not likely chalibo. Political will be political पे हमारा fundamental right is more accurate. So DPSP are constitutional directive that guide the state in establishing social and economic democracy. Feature कौन? You know कि एटा हमरो पार्ट आईवी रे अछि आर्टिकल 36 रु 51 इट इज नॉन जस्टिसेबल माने जदी डीपीएसपी रे जहा लिखा छि जदी गवर्नमेंट न कला आमे कोर्ट को जाई कहि परिबानी कि गवर्नमेंट काहे के जिंस कलानी राइट इट इज नॉन जस्टिसेबल मीनिंग कोर्ट्स कैन नॉट एनफोर्स देम एम एट एस्टैब्लिशिंग ए वेलफेयर स्टेट एंड रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करिवो आ गोटे वेलफेयर स्टेट establish करिवो that is the aim then independence or independent judiciary the constitution established an independent judiciary to protect constitutional supremacy and citizens right our feature la security of tenure and fixed service condition of judge 65 age हेले ही से रिटायर करिवे नॉल जे ताको impeach करा जिवो that is a different case but ता पई the provision is rigid एते जल्दी तमे चाहिले impeach करि परिबोनी एंड इंडिया रे पर्यंत केही भी impeach हेना बिकॉज ऑफ दैट रिजिड प्रोविजन तापर हला सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सॉरी जहाँ भी जज बनकर सैलरी रहइबो दैट इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तापई प्रति वर्ष वोटिंग होवा दरकार नै सेटा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो डायरेक्ट पैसा प्रति वर्ष मिल चलिबो
पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आम जानते गोटे लॉ बनला जदि से लॉटा भल न लगे माने भल मन माने यदि लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर को से हार्म करछि तो ताकू से नल एंड भॉइड करि परिबे जेमति हमर एनजेएससी केस रहितला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन 2014 जो बिल आस्तिला ताकू माने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यूज करी ताकू नल एंड भॉइड कर देले देन जुडिशियल इंडिपेंडेंस गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंस हला they act as guardian of the constitution first protector of fundamental right and arbiter of center state dispute तांकर केतरा jurisdiction अछि केतरा तांकर माने फंक्शन अछि मेजर फंक्शन ला गोटे कि सेंटर स्टेट भीतर जेतल कि डिस्प्यूट हो कि स्टेट भीतर केतल किछि डिस्प्यूट हो सेतल हाई कोर्ट से सब जिंस को एडजुडिकेट करि परिबोनी दैट इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट ला सेक्युलर एंड इंक्लूसिव कैरेक्टर मीनिंग इंडिया फॉलोज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म आमे पढ़िछ दी प्रकार सेक्युलरिज्म अछि गोटे ला यूएस सेक्युलरिज्म जोटी कि सेंटर नॉट द सेंटर गवर्नमेंट and church are two different body and they do not interfere with one another जने अन्य सहित किछि भी इंटरफेयर करिवन बट इंडिया रे कोन इंडिया रे गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर विथ द रिलीजियन इंस्टीट्यूशन फॉर रिफॉर्म जेमिति वाक बिल हो सेते जेमिति किछि रिफॉर्म करिया हो कि अन्य किछि जगह रे हिंदू मैरिज एक्ट हो जिते भी किसी रिफॉर्म कर किसी रिलीजन रे ट्रिपल तलाक रो बैन हो ए सब जिंस गवर्नमेंट कैन डू इट सो एटा कहते पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मीनिंग द स्टेट रेस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन इक्वली विदाउट आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ विथ एनी पर्टिकुलर रिलीजन आम स्टेट रो किसी रिलीजन नहीं आम स्टेट रो किसी रिलीजन नहीं स्टेट माने इंडिया रो इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री बट तुम देखिबो पाकिस्तान वगैरह दे आर इस्लामिक तो सेमानकर गवर्नमेंट ही इस्लामिक नेचर बट आमर पॉजिटिव सेक्युलरिज्म अच्छी तो आम एठी सब धर्म लोक दे कैन रिसाइड सर्वधर्म समभाव देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो जमी आम कथा होतले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर कंप्लीटली रिजिड लाइक यूनाइटेड स्टेट्स कहीं यूनाइटेड स्टेट्स अमेंडमेंट बहुत ही कम होइछि नॉट कंप्लीटली फ्लेक्सिबल लाइक यूनाइटेड किंगडम रे तांकर पार्लियामेंट सोवरेनिटी चले तो पार्लियामेंट जहाँ चाहिए से करदेव इवन कोर्ट भी तादर इंटरफेयर करनी जदि पार्लियामेंट किसी भी लॉ पास करियो दैट इज देयर कि हाँ पास हो गला बट यूनाइटेड स्टेट्स रे कोन तांकर लॉ पास करिया बहुत डिफिकल्ट बट इंडिया रे जेहेतु हमरो एते डाइवर्सिटी अछि सो वी हैव सम रिजिड माने वी हैव सम रिजिड प्रोविजंस एंड सम सिंपल प्रोविजंस जो थे आम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर परिबा किछरा सिंपल मेजॉरिटी हबो किछरा पय तुमको स्पेशल मेजॉरिटी दरकार पड़िबो टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी एस्पेक्ट लाइक सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी जेमति एट लिखाई सिंपल मेजॉरिटी किछि कॉन्स्टिट्यूशन को आम अमेंड कर परिबा लाइक एडजस्टमेंट और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स रिक्वायर्स कंपैरेटिवली इजियर प्रोसीजर गोटे नुआ स्टेट बनला 2014 रे 14 पाखापाखि बोधे जो आमर आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग है so that is required a simple majority in the parliament and it is passed but rigid aspect आम यदि कथा हवा that required special majority and ratification by half of the states जेमति तमरो हेगला जीएसटी हेगला ठीक जीएसटी प्रोविजन जो जीएसटी लागू होला इंडिया रे that required special majority in the parliament along with ratification by half of the states federal provision cannot be altered unitarily by the parliament जहाँ फेडरल सिस्टम अच्छी कि जोड़ा स्टेट लिस्ट अच्छी कि सेंट्रल लिस्ट अच्छी ताकू स्टेट रु हटे कि कनकरेंट रे पकेबो कि सेमति किछि यदि चेंज करियो दैट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी along with ratification by half of the states judicial or judicially evolved basic structure doctrine limits amendment power तापर हला ओके एटा तो अच्छी बहुत सारा जिनस थिला तो आमे जति की इंपोर्टेंट थिला ओके तापर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह अच्छी यू नो ऑल दैट थिंग तो सेटा को आमे बेसी डिस्कशन आमे करनांती फाइन तापर आम कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसिज्म
like the on-Indian or anti-Indian criticism. Okay, like K. Hanumataya argued that the constitution lacked an indigenous spiritual or cultural sound, calling it a music of an English band. ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଲେ ତମର vocabulary strong ହବ and you will got to know କି ଆମର constitution କେମିତି ମାନେ everything you will got to know. ତମେ ଯଦି background ଜାଣିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଆହୁରି easier ହବ ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ. Then talking about constitutional morality, a favorite phrase of Supreme Court recently, like in Sabrimala case, Navjot Johar case, it refers not to public morality but the core values embedded in the constitution like justice, liberty, equality, fraternity. ବୁଝିପାରୁଛ ଆମର ସବରିମାଲା କେସ୍ କ'ଣ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ଏଜ୍ ର ଓମେନ୍ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସବରିମାଲା ଟେମ୍ପଲ୍ ଯୋଉଟା କି ଆୟପ୍ପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ड्यूरिंग द ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲ ମାନେ ଏଜ୍ ରେ ଥାନ୍ତି पर्टिकुलरली ओमेन ओके ओमेन ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଲାଗିଛି ତ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ସାଇକେଲରେ ସେମାନେ ଥିବେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଦ ସବରିମାଲା ଟେମ୍ପଲ୍ ସେଟା ହେଲା ମାନେ ପବ୍ଲିକ ମୋରାଲିଟି कि आम फेथ थिला आम मानुचु बट सेठी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अनुसार दैट ओके जोटा कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट जो एक्ट पास माने जो तंगर वर्डिक्ट पास कले दैट वाज बेस्ड ऑन जस्टिस, दैट वाज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. देन किसी कमेंट करती कि द एसिमेट्रिक नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म ठीक तापर आसिया the basic structure of or जोटा हमें कहते कि basic structure doctrine और basic structure evolution of basic structure meaning कौन the basic structure doctrine states that parliament can amend any part of the constitution under article 368 constitution जदि चाहिबो से जे कोनोसी पार्ट ऑफ द constitution को से amend कर परिबो including the fundamental rights but it is important you need to remember but cannot alter the basic structure or essential features of constitution. Parliament is all powerful. Parliament under article 368 they can amend anything but they can't amend the basic feature or basic structure of the constitution. The essence of this doctrine is constitutional supremacy is more than parliamentary supremacy. एटी देखो लिखाइनी जुडिशियल सुप्रीमेसी लिखाइनी डोंट कंफ्यूज विथ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. आमे कहउचंदी कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन होची सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. ता अंडर रे तमरो पार्लियामेंट भी काम करिवो, ता अंडर रे तमरो जुडिशियल भी काम करिवो, ता अंडर रे एग्जीक्यूटिव भी काम करिवो, सब काम करिवो बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. ताकू पार्लियामेंट चाहिए भी अंडर आर्टिकल 368 रे बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन है ताकू अमेंड कर परिबो नाही. फाइन बर्तमान आम देखिए इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कोटू स्टार्ट है केमती केमती फेज रे से मूव कला. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपोर्टेंट. सो पुट और टिके अटेंशन देकी सुनिबो. इट इज स्टार्टेड विथ शंकर प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में स्टार्ट है केस. व्हाट इज द इशू? द वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेदर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स. जो दोराई चंपर राजन ओके जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट थिला चंपकम दोराई राजन केस और दोराई राजन चंपकम केस से जो अमेंडमेंट करागला तो से पचरागला कि whether the first constitutional amendment act is valid or not because it asked a question whether the parliament has the power to amend fundamental rights or not.
जजमेंट कौन आसला जजमेंट आसला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 अनुसार जहाँ जहाँ को लॉ बोली डिस्क्राइब कराई से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंक्लूड करा जाएनी पार्लियामेंट कैन अमेंड इवन फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर इज अनलिमिटेड यू जस्ट गो थ्रू दिस तुम बुझी पारथो कि केमिति से माने इंटरप्रेट कले कि कहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यदि आर्टिकल 13 नहीं आसुनी इट इज नॉट ए लॉ तो आपको अमेंडमेंट करे कौन असुविधा अछि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड इवन द फंडामेंटल राइट्स and it has unlimited power of amending the constitution significance कौन है it established parliamentary supremacy माने इटी even the parliament is looks more powerful than the constitution इटी parliament तुमरो constitution to more powerful देखा गला second case असला जोटा कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 ने असला द इश्यू वाज कैन पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स सेठी से पचला फर्स्ट अमेंडमेंट ऊपर एठी पचरा गला कि पार्लियामेंट कोन फंडामेंटल राइट को भी अमेंड करि परिबो व्हाट इज द जजमेंट constitutional amendment is law under article 13 parliament cannot amend fundamental rights are transcendental and immutable एटी चेंज होगा स्टार्ट है सी कहले कि नो नो जोटा हमें फास्ट जो वर्डिक्ट आसला दैट इज नॉट राइट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज आल्सो ए लॉ अंडर आर्टिकल 13 पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल ठीक अच्छे सिग्निफिकेंस कौन लगा ये देखा जुडिशियल सुप्रीमेसी ओवरटर्न शंकर प्रसाद केस जो शंकर प्रसाद केस रे जहाँ जजमेंट आसला ताको ओवरटर्न कर दिया गला बाय द सेकंड केस ये जो सेकंड केस आसला ये देखो दैट गोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम तो गवर्नमेंट ऑफ से टाइम रे जो गवर्नमेंट थिल तांको विरुद्ध रे गला गवर्नमेंट केम अप विथ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 व्हाट इज द बैकग्राउंड गवर्नमेंट कंसीडर्ड गोलकनाथ एन ऑब्स्टेकल टू लैंड रिफॉर्म एंड सोशलिस्ट पॉलिसीज गोलकनाथ केस को गवर्नमेंट मान लेला कि दैट इज क्रिएटिंग हिंड्रेंस फॉर लैंड रिफॉर्म एंड सोशलिस्ट पॉलिसी तो लैंड रिफॉर्म रो बहुत माने बोलबाला चलथिला तार पीक पीरियड थिला लैंड रिफॉर्म तो लैंड रिफॉर्म करेक्शन कोन चाहूतले कि लोक माने हाथ रे गोटे लिमिटेड अमाउंट लैंड रो जदी एक्स्ट्रा लैंड अछि तांको नै कि हम अन्य लोक को दे देबा लैंड रो डिस्ट्रीब्यूशन हे परियो सो दैट जेहेतु हमरो मैक्सिमम % ऑफ पीपल वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर को मोर फ्रूटफुल करया पे सब स्टेप्स निया होतला सो हियर द प्रोविजन कौन कौन रहिला 24th constitutional amendment act रे it restored the parliament power to amend any part of the constitution including fundamental rights फिर तरे पार्लियामेंट रो पावर दे देला कि से किछि भी चाहिले जहा चाहिबो ताहा ताको अमेंडमेंट कर परिबो मेड प्रेसिडेंशियल असेंट मैंडेटरी रूल ऑब्वियसली लॉ होबा गरु प्रेसिडेंट रो असेंट नेला पर ही सेटा एक्ट बोली माने माने माना जाए डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13 ठीक अछि फसल चलला एठी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इट रीअसर्टेड पार्लियामेंटरी अथॉरिटी ओवर द स्टेज फॉर केशवानंद भारती केस परे ठीक अछि केशवानंद भारती केस परे एटा कौन करा गला कि सॉरी नॉट केशवानंद केस आगुरु इट रीअसर्टेड पार्लियामेंट अथॉरिटी पार्लियामेंट को फिर थरे फुल अथॉरिटी मिल गला तापर आसला केशवानंद भारती द वेरी फेमस केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973 व्हाट इज द इशू द वैलिडिटी ऑफ 24th 25th एंड 29th अमेंडमेंट ए सब जो अमेंडमेंट अच्छी whether they are valid or not the parliament can amend any part of the constitution including fundamental right but it cannot alter or destroy the basic structure of constitution this is the point where the basic structure comes into
front. Parliament किछि भी amend करि परिबो constitution रो, but it cannot alter or destroy the basic structure of the constitution. What are the features they have mentioned under basic structure? गोटे कहले कि supremacy of constitution. constitution सबुठु ऊपर रहइबो. Parliament, executive, judiciary सबुदा तळे काम करिवे. Republican and democratic government, secularism, federalism, separation of power, judicial review, rule of law. But this is not the complete list. आगु आगु जेमती इवॉल्व हे चलिबो नुवा नुवा बेसिक स्ट्रक्चर फीचर आदर ऐड हे जिबे. राइट. तापर असला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जोडा का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली भी कोंदी, कारण बहुत सारा तादरे अमेंडमेंट करा हेतिला. What is the background? Passed during emergency to establish parliamentary supremacy. The provision was declared parliament amending power was unlimited, made constitutional amendment beyond judicial review, and gave primacy to DPSP over fundamental right. तीनटा जिनस कहले. फर्स्ट कथा कहले कि पार्लियामेंट रो जो अमेंडिंग पावर अछि दैट इज अनलिमिटेड. जहाँ चाहिए ताहा चेंज कर परिबे. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. जदि किछि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा होछि, किछि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा होछि, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू तादरे हेई परिबो नाही. एंड गिव प्राइमेसी टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट. जदि दीटा किंबा एमती गोटे केस अछि जोटी फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड टू फुलफिल डीपीएसपी, से जगह रे डीपीएसपी विल बी गिवन मोर weightage. The significance was it was an attempt to override the basic structure doctrine and weaken judicial review. ठीक अछि. 42nd हे गला. तापर हला मिनर्वा मिल केस 1980 रे असला against the Union of India. The Supreme Court struck down part of 42nd Constitutional Amendment Act. देखो से struck down पूरा Constitutional Amendment Act of 42nd को बोलेनी, struck down parts of 42nd Constitutional Amendment. 42 जो हेतला 42तम संविधान जो संशोधन करा हेतला तार पार्ट को struck down करा गला, पार्ट को काटे माने अमान्य बोली घोषणा करा गला. It also added the basic features like limited amending power of parliament, again judicial review, harmony and balance between fundamental right and DPS. से कहले कि एमिति आमे करिवानी कि केवल फंडामेंटल राइट को माने केवल आमे जुडिशियल केवल आमे डीपीएसपी को पावरफुल मानिबा आ फंडामेंटल राइट को वायलेट होबा दबा. रादर आमे ताकू नबा as a balance between both DPSP and fundamental right. It reaffirmed that parliament is a creature of constitution and cannot become its master. constitution ही parliament को power देइछि, तो जेहेतु constitution द्वारा parliament form होइछि, से केमिति master हे जिवो. The parliament must work under the constitution. It strengthen the basic structure doctrine. तापर हला वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983-81 कोन हला इंट्रोड्यूस prospective application of basic structure doctrine. एथरे कोन करला इंपोर्टेंट हला amendment made before 24 April 1973 केशवानंद भारती जजमेंट आगरु remain valid. आउ 24 April 1973 पर जते भी amendment हेछि they are subject to basic structure test. ठीक अछि. इवन 42nd constitutional amendment act सहित जहां भी 24 April 1973 पर आछि, everything is to be tested against the basic structure. What is the significance? It provided it provides certainty and protected past constitutional amendment while preserving future judicial review. आगुर जति की constitutional amendment हे जायतला that's okay. ताकू आमे माने से जो कोंदिनी कि गोटे पेडी हे की अछि ताकू खोलोनी पांडोरा बॉक्स भलिया माने खोलले कोन कोन बारिबो ताकू रखो. बाकी एबेटू माने केशवानंद भारती केस पर जहाँ भी अमेंडमेंट हेछि कि जहाँ भी अमेंडमेंट हबो सब गुडा जुडिशियल रिव्यू अंडर रे आसीबो. राइट. सो एटा रा तमरो केस तमे गोटे बढिया फिगर करके एटा देखि परिबो. स्टार्ट विथ
Shankari Prasad, then moved to Goloknath, then 24th Constitutional Amendment Act କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଏମିତି ବକ୍ସ କରିକି ବି ତମେ ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଶଙ୍କରୀ ପ୍ରସାଦ, ଗୋଲକନାଥ, ଠିକ୍, ତାପରେ 24th, ତାପରେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ଯାହା ବି ଅଛି, ତାପରେ 42nd Constitutional Amendment Act, ତାପରେ ହେଲା ତମର ମିନର୍ଭା ମିଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଇଜ वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ଏତିକି ଜିନିଷ ତମକୁ ଲେଖିକି ଦବାର ଅଛି। ଓକେ, ସୋ what is the importance of this basic structure doctrine? Importance la, it preserves constitutional identity, prevents parliament from destroying the fundamental philosophy of the constitution. Constitution रे जहाँ fundamental philosophy अच्छी किंबा जहाँ fundamental rights दिया है ची, that is against the tyranny of the parliament. Parliament रे जो बन अच्छे they are powerful. लोक माने कभी यदि किसी fundamental rights न रही हो ताल तो executive किंबा legislature जहाँ चाहिए भी से माने करी परियो ना लोगों के against रे, तो ताकू कोई protection दबो। So the constitution जहाँ provision देई ची fundamental rights वगैरह that must be preserved. Second ला maintains constitutional supremacy. जेहेतु parliament constitution under a form है ची, so it cannot made the master of the constitution. It ensures that constitution remains supreme over temporary political majorities. Check of abuse of amendment power, prevents authoritarian amendment and concentration of power. गोटे सर्टन गोटे दल को बहुत अधिक पावरफुल मिलगला, से चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दो, कह ना ना आगुरी आम होता 5 वर्ष इलेक्शन होता, 5 ईयर इलेक्शन होता, आम काम करिया 15 वर्ष इलेक्शन करिया। तो ये लोक मानकर फंडामेंटल राइट कि लोक मानकर जो माने कौन अच्छे राइट्स अच्छी, दैट इट इज नॉट फंडामेंटल राइट एक्चुअली, एटा तुम लीगल राइट्स आसो, दैट इज वायोलेटेड, राइट। तो एमती करि होबनी, तुमर मेजॉरिटी थिला परे भी यू कैन कंसंट्रेट द पावर और यू कैन यूज एन अथॉरिटेरियन अमेंडमेंट जहाँ चाहिए तुम सेमती कर परिबनी। देन इट प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, सेफगार्ड डेमोक्रेसी, फ्री इलेक्शन, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। डेमोक्रेसी को सेफगार्ड कला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशियल रिव्यू रहिला, सेक्युलरिज्म रहिला, फेडरलिज्म रहिला, मेंटेन्स बैलेंस ऑफ पावर, क्रिएट्स इक्विलिब्रियम बिटवीन पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तीन जन हाथ में पावर डिस्ट्रीब्यूट होकर रहिला, ना कि जन हाथ रहिबो। तो चेक एंड बैलेंस भी रही परिबो ना, मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर जदि करबा, देन प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी अमेंडमेंट एंड दैट मे curtail the citizens basic freedom. Then the last one is it act as a constitutional safety valve, protect constitution from becoming a tool of majoritarian excess or dictatorial tendencies. Importance manrela, preserve constitutional identity, maintain constitutional supremacy, checks abuse of amendment power, protect democracy and rule of law, maintain balance of power, protect fundamental rights, and last one is it act as a constitutional safety valve. Okay, so that's all for today. Thanks for watching the lecture. जो मैंने भी join करचो, thank you all. If you have any questions, you can just either you can DM or you can send me, और तमे ए message रो sorry videos तले तमे comment कर परिबो, so you can answer that. And if you want to join our test series, we are having 2 test series, gotela 36 test wala with full material, that is 8,000 rupees. Our working aspirant पे हमें करचु 12 full length test, full material and complete lecture, जोटा हमें आज first lecture थिला। You can enroll here with 5,000 rupees, 12 FLT plus 4 ओडिया इंग्लिश, टोटल 16 टेस्ट रहिबो एथरे। कंप्लीट मटेरियल जोटा मु पढौची से मटेरियल तुमको देबी GS2, GS1, GS3, ओके सबुथरे तुमरो दी रैंक टेस्ट सीरीज रे GS1 नो नै कि GS4 पर्यंत मटेरियल मिलिबो। along with that you will get the essay 40 टा essay रो हम एक compilation करछु, that is also given to you, fine, so that तुमको आकु छाडी के आ किछि एक्स्ट्रा पढिया पडिबोनी, एतिक रे ही तमरो एग्जाम क्लियर हे जिवो, fine. So thank you all, thanks for watching the lecture, have a great day.